what IDE you want to work with. The IDE is like text editor, you can say, in other words, simple words, but it provides much more than text editor. It provides an entire environment to write your code, run your code, debug your code. Okay, so we understood all these things. Does anyone have any questions till now? If you have any questions, you can directly like stop me, unmute yourself, and ask me. Yeah, yeah, go on. सर आई वांटेड टू आस्क कि ये Mm-hmm. डार्ट फ्रंट एंड लैंग्वेज है या फिर बैक एंड या फिर बोथ? बोथ है। सो पहले जब डार्ट और फ्लटर फ्लटर आया था तो सिर्फ और सिर्फ वो फ्रंट एंड के लिए यूज होता था, बट रिसेंटली वी हैव सीन अ व्हाट वी से a trend that Dart is also used for backend. So you can create your own backend with Dart also and host it on the platforms. So we also have different tools like Dart Frog करके है, Server Pod. तो ये सब, if you use all these packages, you can create your own Dart backend also. तो सर अगर हम चाहें कि डार्ट से अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है हमारा लॉजिक, तो हम्म। मतलब डार्ट फ्रंट एंड यूज कर लिया और कोई लैंग्वेज जो हमें ऑलरेडी आती है बैक एंड के लिए उसे यूज कर लिया, ऐसा पॉसिबल है? हाँ हाँ। इन तो हम लोग यही करते हैं। जो भी हम लाइक एप्स बनाते हैं फॉर कंपनीज, तो हम क्या करते हैं कि एक डेडिकेटेड बैकएंड टीम होती है। वो बैकएंड टीम अपना बैकएंड का कोड रेडी कर देती है और एपीआईज क्रिएट कर देती है, एंड वो एपीआई और यूआरएल हमें दे देती है सो दैट वी कैन गेट डेटा फ्रॉम द बैकएंड। हम लोग बैकएंड डाट में नहीं लिखते हैं, बिकॉज वो फिर मेंटेन करना बहुत हेवी हो जाता है कि सेम टीम इज मेंटेनिंग बैकएंड एंड फ्रंट एंड बोथ। ऑलराइट, थैंक यू। Yeah. A few questions in chat. Does Flutter need coding? Yes, Flutter needs extensive coding. Drag and drop tool नहीं है Flutter. Properly you will have to code. मैं वो भी दिखाऊंगा. Is Flutter a front end or back end? So Flutter खुद एक framework है. It provides a way to create your application. And Dart जो है वो language है. So with Dart you can use write Flutter front end and back end both. Kotlin का क्या? Kotlin, you can use KMN, Kotlin multi-platform. तो उससे you can create apps for Android and iOS, but वो web Mac OS उतना उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वो मोबाइल के लिए है Kotlin. But with Flutter you can create application for multiple platforms. Flutter का स्कोप है, हाँ Flutter का स्कोप है, बिकॉज यू कांट से स्कोप नहीं रहेगा अगर गूगल की टीम पूरी जो है वो अपने खुद के जो एप्स है, इंटरनल एप्स है, गूगल क्लासरूम है, गूगल पे, गूगल अर्थ, यूट्यूब स्टूडियो, ये सब अगर वो लोग फ्लटर पे माइग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फ्लटर का स्कोप है, फ्लटर का फ्यूचर है। अगर वो लोग सोच रहे होते कि हम फ्लटर बंद कर देंगे तो फिर वो लोग कभी माइग्रेट नहीं करते। Same way, there are lots of companies whose app is created in Flutter. आपने क्रेड यूज किया होगा, क्रेड इज क्रिएटेड इन फ्लटर। कैनरा बैंक का जो बैंकिंग एप्लीकेशन होता है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड इन फ्लटर। सो इफ यू फील दैट स्कोप नहीं है या फिर फ्यूचर में वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली हर एक टेक्नोलॉजी का एक टाइमलाइन होता है। आफ्टर 5 to 10 years इट गेट्स स्लो। फॉर एग्जाम्पल कॉर्डोवा या आयोनिक जो पहले इतना बूमिंग था, वो अब इतना बूमिंग नहीं है, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो ऑलवेज यू हैव टू स्टे अपडेटेड। बट ऐसा नहीं होगा कि फ्लटर कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, बिकॉज ओपन सोर्स है। मान लो कि गूगल ने बोल दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे फ्लटर को, तो जो जो भी ओपन सोर्स कम्युनिटी है वो लोग कर देंगे फ्लटर को सपोर्ट। इवन इफ यू गो राइट नाउ टू द फ्लटर एसडीके, और जो पुल रिक्वेस्ट आप देखोगे उसमें से गूगलर्स ने तो बहुत ही कम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है। थर्ड पार्टी कंपनीज है या फिर इंडिविजुअल्स है, मैं हूँ, आप हो, तो यही लोग फ्लटर में जो भी बग्स है वो सॉल्व कर रहे हैं। इज फ्लटर लाइक कॉटलिन? नहीं, कॉटलिन तो प्रॉपरली एक लैंग्वेज है। फ्लटर इज एन एसडीके। इन कॉटलिन यू कैन राइट अ सिंगल प्रोग्राम ऑल्सो, इन फ्लटर यू कैन राइट अ सिंगल प्रोग्राम। वो पूरा एक कंबाइंड, मैं अभी आपको लाइक वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो whenever you create a new Flutter application, it has hundreds of files created. उसको हम you can say it provides an entire environment to create an application.
आई होप कि डाउट सॉल्व हुए होंगे, कुछ कुछ। कुछ कुछ नहीं हुए हो तो भी ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये सब तो समझ लिया हमने कि फ्लटर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लटर के एप्स जो है वो काम कैसे करते हैं? व्हेन यू राइट एन एप्लीकेशन इन फ्लटर और व्हेन यू क्रिएट एन एप्लीकेशन विद फ्लटर, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? सो ये वाला आपका पार्ट है, योर कोड। यू राइट योर कोड इन डार्ट, ठीक है। फिर जो फ्लटर फ्रेमवर्क है वो आपका कोड लेता है डार्ट लैंग्वेज में से, और वो पास ऑन करता है सी प्लस प्लस फ्लटर इंजन को। अब सी प्लस प्लस फ्लटर इंजन का नाम क्या है, किसी को पता है? एनीवन एनीवन एनीवन, इसका नाम है एक। ओके, सो द नेम ऑफ सी प्लस प्लस फ्लटर इंजन इज किया, SKIA. So that's the Flutter engine or rendering engine which is responsible to run your application. अब ये क्या करता है कि स्किया जो है वो डार्ट का जो उसे कोड मिला होता है उसको नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो इफ यू आर रनिंग योर एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉयड, तो वो कॉटलिन या जावा जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसमें कन्वर्ट करता है। इफ यू आर रनिंग इट ऑन iOS, स्विफ्ट में कन्वर्ट कर देगा। इफ यू आर रनिंग इट ऑन वेब, तो HTML JS में कन्वर्ट कर देगा। और फिर वो जो रनर है, मतलब वो जो नेटिव कोड है, वो आपके सिस्टम में रन होता है। एंड दिस इज द रीजन वाई फ्लटर इज फास्टर। रिएक्ट नेटिव ऐसा नहीं करता है। सॉरी रिएक्ट नेटिव आपका कोड जो है वो जेएस में ही रखता है, जेएस में ही कन्वर्ट करता है, और उसी को अपने एंड्रॉयड या iOS पे रन करता है, विच इज नॉट अ नेटिव कोड। सो this is the reason Flutter is a bit faster than other what is it, other frameworks. And we have seen this a lot of times that Flutter is much faster, much smoother than other frameworks. So I hope ये clear है। अगर ये clear नहीं होगा तो काफी कुछ समझ नहीं आएगा। Yes, Kia is open source 2D graphics library written in C++. And एक और thing है, this Flutter team is slowly migrating to a new rendering engine that is Impeller. So this Kia is only 2D. Now, if you want to add a 3D components and everything in your Flutter application, it was not possible. And iOS में क्या है कि iOS specifically it needs a better performant engine. तो iOS में थोड़ा जैंक रहता था, थोड़ा सा लैग होता था। सो दे आर माइग्रेटिंग टू अ न्यू रेंडरिंग इंजन कॉल्ड इम्पेलर। iOS के लिए ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, एंड्रॉयड के लिए वो लोग स्टिल अंडर डेवलपमेंट में है। सो इम्पेलर, विथ इम्पेलर योर एप्लीकेशन बिकम्स मच फास्टर, एंड वो जो लैग हो रहा था वो भी निकल गया। एंड इम्पेलर अलाउज 3D रेंडरिंग ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, लाइक वो अपना एक्सेल वाला टेबल। सो अभी क्या होता है, रो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होता है। what if you want to add a z axis also? So with impeller you can do that. You can have a 3D table, row, column और z axis, कोई भी यूज केस के लिए। so you can do that with impeller now. So the name is impeller. I have mentioned in the chat if you want to check it out. Like किसी को अगर you know कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली यू शुड चेक impeller. ठीक है। सो करंट ट्रेंड्स, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल स्टेटेड बाय लिंक्डइन। ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है कि मेरा मानने की जरूरत है। यू कैन चेक आउट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन एवरी ईयर रिलीजेस की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स क्या है, सो दैट यू कैन लर्न दैट। एंड इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स लास्ट ईयर व्हेन दे रिलीज द report. One of the top 15 GitHub repositories and used by great companies around the world. Uh, if I talk about the companies, Google uses it, Canara Bank, Cred, Alibaba, BMW, Toyota. Then there are many other companies who use Flutter. I remember these names, so I hope you understood this. So these are few of the helpful resources. The best one is the documentation. Flutter's documentation is very good, up to the mark. You can go check it out, and you will understand almost all the concepts.
if you don't like reading, they have also created tutorials. So you can go to flutter.dev/YouTube, and they have all the tutorials available. If you want to just start, I have written a roadmap also to learn Flutter. You can just search roadmap to learn Flutter by Abhishek Doshi, and it will come. And this is my Medium, Abhishek Doshi 26.medium.com. You can check that out also. और मैं YouTube पे ज़्यादा वीडियोस पब्लिश करता नहीं हूँ. लास्ट वीडियो 1 साल पहले किया था, बट ठीक है. ओके, इट्स टाइम फॉर सम एक्शन. चलो कुछ करते हैं. So when you I'm going to show you a Flutter application, and so this is my VS Code. ज़्यादा कोड बेस मत देखना, क्लाइंट कोड है, पता चला तुम लोग ने लीक कर दिया. So I'm going to create a new application, and VS Code में कैसे है कि you can do Control Shift P or Command Shift P and write new project. So you can see there is an option Flutter new project. अब यही चीज़ आप टर्मिनल से कर सकते हो, यही चीज़ आप एंड्रॉइड स्टूडियो से भी कर सकते हो. चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन. मैं ज़्यादातर VS कोड यूज़ करता हूँ बिकॉज इट्स फास्ट. भाई नहीं दिख रहा तो बोलो ना. न्यू प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड सिलेक्ट लोकेशन कि कहाँ आपको ये एप्लीकेशन क्रिएट करना है. बेसिकली इट क्रिएट्स अ प्रोजेक्ट, यू कैन से. फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट होता है. एंड फ्लटर एप्लीकेशन 2, ठीक है. So it runs a command something 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 something, and it creates this something. तो अब ऊपर से आते हैं. So you can see if I open all this folders, अभी तो आधे ही खुले हैं. मैंने खुद ने कभी इतने सारे फोल्डर्स नहीं खोले. बस थोड़ा ही बाकी है. ओके, सो ऑल दिस फाइल्स, अभी मोर देन 100 फाइल्स तो होगी. सो अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि कॉटलिन और फ्लटर में डिफरेंस क्या है. कॉटलिन का एक फाइल होता है, राइट? हाँ या ना बोलो, मैंने कॉटलिन पे काम नहीं किया. हेलो हेलो हेलो. कॉटलिन का एक फाइल होता है, राइट? और फ्लटर में इतने सारे फाइल्स क्रिएट होते हैं जिसमें कॉटलिन भी है, कॉटलिन यूज होता है. सो एक एसडीके या एक फ्रेमवर्क क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स एन एंटायर सिस्टम, इट क्रिएट्स एन एंटायर इकोसिस्टम फॉर यू, so that you can create your application or create your web application. अब आप रिएक्ट में जाओगे तो रिएक्ट में भी काफी सारी फाइल्स क्रिएट होगी, हर एक का काम अलग अलग है, ठीक है. सो एक एक करके जाते हैं. डॉट डाट टूल को भूल जाओ, डॉट आईडी को भी भूल जाओ. ये दोनों जो है ये आपकी आईडी के ऊपर होता है कि आप कौन सा आईडी यूज कर रहे हो. देन एंड्रॉइड फोल्डर. सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, फ्लटर कन्वर्ट्स योर डार्ट कोड टू नेटिव कोड. तो जितना भी वो नेटिव कोड एंड्रॉइड पार्ट का होगा वो सब इसमें होगा. इफ यू गो हियर 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 हियर, तो दिस इज योर manifest.xml. फिर ये आपका जावा फाइल है. नाउ माय डिफॉल्ट लैंग्वेज इज सिलेक्टेड एज this Kotlin. So I might have a Kotlin file over here. Yeah, main activity .kt. Then we have resources file, Gradle file, etc. Similarly, when you're running your application on iOS, your this Flutter framework converts the code to native iOS जो इसमें रहता है.
लिनक्स, मैक ओएस, वेब, विंडोज, सेम चीज कि बेसिकली अगर लिनक्स में रन कर रहे हो तो लिनक्स में जाएगा। whenever you write your test cases, तो टेस्ट फोल्डर है उसके अंदर लिखने होते हैं, और जो मेन आपका एप्लीकेशन है वो लिब फोल्डर के अंदर आता है। मेन डॉट डार्ट हो गया, होम डॉट डार्ट एक्सेट्रा, जो भी आपको डार्ट में फ्लटर एप्लीकेशन के लिए लिखना है वो सब लिब फोल्डर के अंदर आएगा। सो दिस इज माई मेन डॉट डार्ट। ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ये हमने तो क्रिएट किया नहीं है। रुको मैं थोड़ा ये सब हटा देता हूँ कमेंट्स, तो थोड़ा छोटा दिखे वरना तुम लोग डर जाओगे ऐसे ही। ठीक है, सो दिस इज द कोड। थोड़ा फिर भी बड़ा है, आई मीन ये मेरे लिए तो छोटा है। एक एक करके जाते हैं कि ये कोड करता क्या है, देन आई विल शो यू द डेमो ऑफ इट। फर्स्ट वॉइड मेन है। वॉइड में सबको पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है वॉइड मेन, वहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देन वी हैव रन ऐप। ये रन ऐप क्या है कि डार्ट एक लैंग्वेज है, ठीक है। हाउ विल द फ्लटर फ्रेमवर्क नो, और हाउ विल डार्ट लैंग्वेज नो दैट यू आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन? You can even use Dart as an individual language without Flutter, but you can't use Flutter without Dart. तो Dart और Flutter दोनों को पता कैसे चलेगा कि आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो? तो दिस इज द रन ऐप एप्लीकेशन, रन ऐप विजेट, रन ऐप फंक्शन विच टेक्स अ विजेट। अब विजेट क्या है? इफ यू आर फ्रॉम वेब बेस्ड बैकग्राउंड, जो हमारे टैग्स होते थे, अपना बॉडी टैग हो गया, देन इमेज टैग, तो ये सब जो टैग्स है वो फ्लटर में विजेट्स है। वी हैव सेंटर विजेट, देन टेक्स्ट विजेट, इमेज विजेट एक्सेट्रा। तो कोई भी एक यूआई कंपोनेंट इज आर विजेट। नाउ स्मॉलेस्ट यूआई कंपोनेंट दैट यू सी ऑन द स्क्रीन इज आर विजेट। अब दो टाइप के विजेट होते हैं, स्टेटलेस विजेट एंड स्टेटफुल विजेट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेटलेस विजेट वो होता है कि जब तक यूजर आपका ऐप यूज कर रहा है, वो पर्टिकुलर विजेट या वो पर्टिकुलर यूआई कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाला, वो स्टैटिक है। स्टेटफुल विजेट ये होता है कि whenever the user uses your application, based on user interaction आपका वो यूआई चेंज हो रहा है, वो स्टेटफुल विजेट है। ये क्लियर है? बिकॉज ये दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लटर। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फ्लटर में कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये क्लियर है? अरे 45 में से 5 लोग तो हाँ बोल दो, उतना ही चाहिए मुझे तो। ठीक है, so there are two types of widgets, stateless widget and stateful widget. Stateless widget which is static, जो कभी change नहीं होता user interaction पे भी. Stateful widget which changes based on user interaction. अब मैंने जैसे बोला था कि OOP concepts बहुत important है। You can see class, extends, override, ये सब OOP concepts है। That class, यहाँ पे इनहेरिटेंस लग गया, ओवरराइड वाला आई गेस पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन के लिए वाला कॉन्सेप्ट है एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। स्टेटलेस विजेट हो या स्टेटफुल विजेट हो, दोनों के पास एक मेथड है, बिल्ड मेथड। ये बिल्ड क्या करता है कि आपको जो भी यूआई दिखाना हो स्क्रीन पे वो सब बिल्ड के अंदर जाता है। आपको अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट दिखाना है तो भी आपको बिल्ड के अंदर लिखना पड़ेगा। यू कैन सी हियर आल्सो, जितना भी यूआई का पार्ट है वो सब बिल्ड के अंदर है। सेंटर टैग है, सेंटर विजेट है, ऐप बार विजेट है एक्सेट्रा। देन वी हैव मटेरियल ऐप। ये एक विजेट है which provides you material UI components. So Flutter framework supports Material 3 also, Material 3 or Material U, and Material app is responsible to provide the that look and feel of Material UI. Material app is not compulsory. You can also use Cupertino app. Cupertino app will provide the look and feel of iOS,
that is this iOS, iOS, हाँ, iPhone OS. So if you want कि आपका पूरा ऐप जो है वो iOS जैसा ही दिखे, तो you can use Cupertino app also. You just need to change it to Cupertino app. That's it. और import कर दो, उसमें थीम नहीं होता, तो ये हटा दो, हो गया. नॉर्मली वी यूज मटेरियल ऐप. और ऐसा नहीं है कि अगर आपने मटेरियल ऐप यूज किया तो आप iOS की तरह ऐप नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है. इवन इनसाइड मटेरियल ऐप यू कैन यूज द iOS स्टाइल डायलॉग्स, that is Cupertino dialog. Even for app bar you can use similar to iOS, so it's very flexible what you want to use inside what. Then we have title. यहाँ से थीम सेट हो रहा है. और होम है. होम क्या करता है कि आपका जो मटेरियल ऐप है वो ऐप का होम क्या है. तो दिस इज अनदर क्लास माय होम पेज. ये अपना स्टेटफुल विजेट है विच टेक्स टाइटल जो ऊपर से पास हो रहा था यहाँ पे. ये हमने पास किया है टाइटल. और माय होम पेज स्टेटफुल विजेट है. नाउ स्टेटफुल विजेट के पास एक स्टेट होता है कि करंट टाइम में आपका जो स्क्रीन है वो कैसा दिखता है. सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट. सो क्लास माय होम पेज स्टेट, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है इंट काउंटर, इनिशियलाइज्ड इट विद 0. ये मेथड पे बाद में आता है. ये हमारा बिल्ड मेथड. स्कैफोल्ड क्या है कि स्कैफोल्ड इज अ पेंटिंग, यू कैन से कैनवास है, ब्लैंक कैनवास है, ठीक है. उसके ऊपर आपको जो चाहिए वो पेंट कर सकते हो. इफ यू वांट टू शो एन इमेज यू कैन शो इट इनसाइड स्कैफोल्ड. और स्कैफोल्ड जरूरी नहीं है यू हैव टू यूज इट, यू कैन रिमूव दैट आल्सो, यू कैन यूज कंटेनर आल्सो. सो स्कैफोल्ड के अंदर आप ये दिखा सकते हो कुछ भी, लाइक टेक्स्ट दिखाना हो टेक्स्ट दिखा दो, इमेज एक्सेट्रा. ऐप बार क्या है कि एप्लीकेशन के वो टॉप में जो बार होता है, फॉर एग्जांपल ये VS कोड है तो इसका ये वाला ऐप बार हो गया, ये जो ऊपर है. तो दिस इज द ऐप बार. फिर बॉडी क्या है, ऐप बार से नीचे का पूरा पार्ट, ये वाला जहाँ पे हम ये कोड लिख रहे हैं, ये वाला पूरा पार्ट बॉडी हो गया इसका. सिमिलरली एप्लीकेशन का ये बॉडी हो गया. सो उसमें हमने एक सेंटर है, सेंटर विजेट है. वो क्या करता है कि उसका जो भी चाइल्ड होगा उसको सेंटर में दिखाएगा. देन वी हैव कॉलम जिसमें हमने दो टेक्स्ट डाले हैं. ये कॉलम क्या करता है कि वही एक के नीचे एक विजेट दिखाता है. देन वी हैव फ्लोटिंग एक्शन बटन. सो फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या है कि एंड्रॉइड में आई गेस व्हाट्सएप में वो चैट में यहाँ पे कॉर्नर पे बॉटम राइट कॉर्नर पे बटन है फॉर न्यू चैट. सो दैट इज अ फ्लोटिंग एक्शन बटन. ओके, बैक टू दिस मेथड. अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एक सेट स्टेट करके है. सेट स्टेट क्या करता है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हो और वो वैल्यू चेंज की वजह से आपको पूरा यूआई रीबिल्ड करना हो, तो आपको सेट स्टेट यूज करना होता है. सो whenever the counter value is changed, I want to call my build method again so that here the counter value updates. So when I do set state, and inside set state if I do counter plus plus, this counter value will update, and this build method, this particular build method will again be called so that updated value is shown. थोड़ा बहुत समझ आया है ये? मैं आपको डेमो दिखाता हूँ. So let me open my Android emulator. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल रन दिस एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉइड. उसके बाद iOS पे भी रन करेंगे, वेब में भी रन करेंगे और मैक OS में भी ट्राई करेंगे. एंड मैं कोई चेंज नहीं करूंगा कोड में. आई एम जस्ट डूइंग F5 जिससे ये रन होगा. और यू कैन ऑल्सो गो टू दिस ट्राइंगल वाला डीबग कमांड और यहाँ से रन कर सकते हो, या फिर ऊपर रन है वहां से भी स्टार्ट डीबगिंग कर सकते हो. So it says launching lib/main.dat, which is this file on SDK G Phone 64 ARM 64. ये मेरा एमुलेटर का नाम है in debug mode, so that you can check it out कि कहीं आपको debug points ऐड करने हो तो आप ऐड कर सकते हो. So whenever you run your application for the first time, it will take a bit of time because वो सारी files डाउनलोड करता है. Gradle फाइल हो गया, iOS में जाओ तो CocoaPods हो गया, तो वो सब डाउनलोड करता है.
सो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, और उसके बाद वो रन होगा। और मेरे एमुलेटर में तो जगह भी नहीं होगी शायद। लेट्स सी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, जब तक ये रन हो रहा है तब तक। आधे को समझ आया या समझ ही नहीं आया? ठीक है। कोई कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? सही है। एंडरसन की थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था फ्लटर, आई वाज नॉट एबल टू राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच फॉर अराउंड 6 months. Then I was able to slowly understand it and write. But yeah, it becomes a bit difficult to understand things initially. But when you start understanding things, you would love to work with Flutter. ये तो रन ही नहीं हो रहा। हो गया, हो गया, हो गया। जगह नहीं है। लेट मी uninstall some app. Is Flutter harder than React? Okay. So if you are coming from a web development background, अगर आपको जावास्क्रिप्ट और वो सब बहुत अच्छे से आता है तो रिएक्ट इजी होगा। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम क्लास बेस्ड बैकग्राउंड, ओपी कॉन्सेप्ट सीखा है आपने, तो फिर फ्लटर ज़्यादा इजी होगा। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन। और सो ये है हमारा ऐप पर फ्लटर डेमो होम पेज। ये अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन है। Now if I click on plus, it updates the value over here. Now if I remove this set state, okay, so there is one concept of hot reload. What hot reload does is, if you have made any changes in your UI, and if you do just this flash icon, it will hot reload. हॉट रिस्टार्ट क्या है कि पूरा एप्लीकेशन रिस्टार्ट करता है। हॉट रिलोड सिर्फ वो पर्टिकुलर स्क्रीन को रीलोड करता है। सो मैंने अभी सेट स्टेट निकाल दिया। You can see the value might get updated. Let me print it. Okay. So ये देखो वैल्यू अपडेट हो रही है। यू कैन सी 28, 29, 30, 31, बट यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा। द रीजन है सेट स्टेट नहीं है। तो क्या है कि अब यहाँ पे अपडेट तो कर दिया हमने काउंटर प्लस प्लस करके, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि नई वैल्यू आ चुकी है? लाइक यू नीड टू नो, एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए उसे या टेक्स्ट विजेट को कि देयर इज अ न्यू वैल्यू ऑफ काउंटर, सो प्लीज अपडेट योरसेल्फ। तो सेट स्टेट यही करता है। सो नाउ इफ वी ऐड सेट स्टेट बैक, hot reload, and it works. फिर let's suppose you want to change the background color of this app bar, so you can do colors dot yellow, और चेंज हो गया। बहुत बकवास लग रहा है लेकिन हाँ ये फिर भी ठीक है। Then same way for floating action button also, if you want to change the color, you can change it. So the it becomes very fast when you have hot reload. तो ये समझ आ गया। हमने बस एंड्रॉयड पे रन किया। नाउ लेट मी रन इट ऑन iOS. Starting iOS simulator. So if you want to run on iOS, you need a Mac, because iOS simulators और वो सब Mac के सिवाय नहीं मिलते हैं। Even if you have iOS device, you won't be able to run it, because जो पूरा इकोसिस्टम है वो मैक में ही अवेलेबल होता है। एक्स कोड और वो सब आपको पता हो तो विच इज़ रिक्वायर्ड, तो वो मैक में ही है। सो इफ़ यू वांट टू डेवलप योर फ्लटर एप्लीकेशन फॉर iOS, यू नीड टू यूज़ मैक। एंड्रॉयड के लिए तो आप विंडोज़ भी यूज़ करते हो, मैक भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, लेट्स सी इफ इट रन्स और नॉट। वैसे तो रन हो जाता है, कभी कभी कुछ इश्यू होता है कोको पॉड्स का और वो सब, व्हेन यू अपग्रेड योर फ्लटर एप्लीकेशन और फ्लटर एसडीके, तो तब कभी कभी इश्यू होता है विच यू कैन सॉल्व बाय रीबिल्डिंग। देखा हुआ ना इश्यू। ठीक है, आई नीड टू इंस्टॉल 17.2, तो अभी करूँगा तो ये रन नहीं होगा, सो iOS स्किप कर देते हैं। और लेट मी सी इफ आई हैव स्मॉलर वन। ये मेरा आईपैड हो गया, वी कैन रन इट ऑन आईपैड ऑल्सो, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अगर इसमें iOS वर्जन पुराना होगा तो ये चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा इसमें भी। दिस इज iPad mini 6th जनरेशन। हाँ, नहीं चला। आई नीड टू इंस्टॉल iOS 17.2। दिस इज ऑन 17.0, दैट्स व्हाई। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन रन ऑन iOS, जो मैंने दिखाया नहीं। नाउ रनिंग ऑन वेब, I just selected Chrome as my device, and it is now launching it on Chrome. Web is very fast. You can just, whenever you are whenever I give talk, I use web to show, because वो फटाफट हो जाता है। Yeah, so you can see ये पूरा एक वेब एप्लीकेशन हो गया। यू कैन रीसाइज इट, मिनिमाइज कर सकते हो। दिस इज योर वेब ऐप। Next, let's try to run it on macOS. Let's see if it runs, या फिर मुझे इसमें भी कुछ इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। Yeah, so this is our Mac application. Increment, decrement, I can show you, like यहाँ पे आप, this is Mac application, a proper Mac application. And this also you have this full screen, minimize, close, etc. So you can also create a Mac application with Flutter. Okay, so I hope you understood the code, you understood how we can run it. And going back, any questions? Any questions? If you have any questions, it meant that you are not listening. So we are not going to answer any questions. If you have any questions, please let me know. If you don't want to ask right now, and if you want to ask later, you can message me anywhere, like LinkedIn, Twitter, or Instagram. It's same, Abhishek Doshi 26. You can check out my portfolio, abhishekdoshi.dev. It is also made in Flutter. And the swagbox.in, that is also made in Flutter. Both websites are made with Flutter Web, so you can check it out. For Flutter, we don't have. For Dart, we have. Flutter is a framework. So for Dart, we use .dart extension. So you can see main.dart.
Okay, that was it. But I was thinking if we can also play some quiz. Anyone want to play? So, where did you install the emulator? So, when you want to install the emulator, you whenever you like create whenever you install all this, what do you say, Flutter SDK and everything, at that time you will be able to install your emulator in simulator also. SDK full form is Software Development Kit. So you can, like, Flutter is a software development kit. ठीक है, we can play this. Kahoot, आ जाओ चलो. Widget, widget in Flutter is any UI component that you see in Flutter is a widget. So whatever you saw, the app bar is a widget, the text was a widget, the button was a widget. That everything in center was also a widget. I think no one wants to play Kahoot. The winner will get something. I will send them a T-shirt. ओरिजिनल नाम डालना, वरना पता नहीं चलेगा विनर कौन है. There are 35 people. इतना स्लो क्यों आ रहे हो? जल्दी आओ ना. मैंने भी सोचा था मूवी देखने का. Let me share a tab so that you can listen to this music also. बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग. You can also ask your friends who has not joined the session to join. क्या पता उनको goodies मिल जाए. 19, 37 लोग हैं, उसमें से 19 आए. I think you folks don't like goodies.
21. The real answer is we have a t-shirt. Not Flutter t-shirt, FlutterConf India t-shirt. I can also sell Flutter t-shirt. Yes, the winner will get a Flutter t-shirt. No, I don't have that much money. हाँ, तुम लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, मैं 150 रुपया देगा, बाकी का तुम लोग देना। इतना का तुम लोग करते क्या हो? मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है। It will start in 2 to 4 minutes because many people are still joining. हाँ, ML के लिए जरूरत पड़ती है। गेमिंग के लिए टाइम भी मिलता है तुम लोग को? मुझे ज्यादा से ज्यादा फोन में गेम के लिए टाइम मिलता है, वो भी कभी कभी। ठीक है, शुड आई स्टार्ट और एनीवन इज जॉइनिंग? अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो हाथ ऊपर कर दो, वरना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके, मोहक भाई जल्दी करो। ओके, शुड आई स्टार्ट? ठीक है, आई एम स्टार्टिंग नाउ। 24 people and start. Ignore this. This quiz is old one. So, what is Flutter? क्या है, लैंग्वेज है ना? मैंने लॉक कर दिया। गेम पिन अब थोड़ी दिखता है, अब नहीं दिखता। It's a UI toolkit. It is not a JS framework. गेम पिन, अरे कोई गेम पिन दे दो इनको। वो लिंक थी ना, हाँ ये रही। ओके, सो इसके कोई पॉइंट्स नहीं थे। दिस वाज जस्ट अ ट्रायल क्वेश्चन। स्कोर बोर्ड सबका 0-0 है। दिस वाज जस्ट अ ट्रायल क्वेश्चन, जिसको अगर काउंट नहीं आता हो तो बस एक ट्राई करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अरे फटाफट आंसर दो तो ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. आधे लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे. 6 और मोर. दो कौन बोला? Who was who said 3? Android, iOS, macOS, Windows, Linux, web, embedded, and now Vision OS. So 8 platforms now. Yes, Wear OS also. See, 9 platforms. ये फ्लटर टी शर्ट को कुछ नहीं मिलेगा. They're promoting his session. Okay, so does Flutter support Material 3 or Material U components? Yes or no? Who were the two people who said false? I told you that Material 3 or Material U is supported in Flutter, and whatever we saw that demo, it used Material 3. Akansha is on top. Flutter t-shirt को कुछ नहीं मिल रहा. Kashish second. Shekhar third. Ishita has a streak with 3 correct answers in a row. Ishita थोड़ा जल्दी आंसर दो. What is the name of Flutter's mascot? Come on, come on. अरे if you even don't know the answer, तुक्का तो लगा तो क्या पता सच हो जाए. The word. Yes, its name is Dash. मोना गिटहब का मैस्कॉट है. ऑक्टोकैट भी गिटहब का मैस्कॉट है. बेमैक्स एक मूवी कैरेक्टर है. बेमैक्स 2 लोगों ने किया. यस, आई हैव बेमैक्स. ये रहा. दिख रहा है आदित्य? ये रहा. मेरा डांसिंग बेमैक्स है. ओके. फ्लटर टी शर्ट ऑन फर्स्ट. फ्लटर टी शर्ट कौन है? बताओ तो नाम भाई. ओरिजिनल नाम बताओ ये फ्लटर टी शर्ट वाले का, तो शायद उसको कुछ मिल भी जाए. ठीक है. नेक्स्ट. True or false? You can't show iOS style dialog on Android using Flutter. True or false? False. You can show iOS dialog on Android using Flutter. I told you ना Flutter is a cross platform. तो अगर आप लोग ने iOS dialog use भी किया तो that would look same in Android also. You can just use Cupertino dialog. And इशिता धीरे धीरे ऊपर आ रही है. फ्लटर टी शर्ट को कुछ मिल नहीं रहा. ये फ्लटर टी शर्ट खेलना बंद कर दे. What is the name of Flutter's engine, rendering engine?
I mentioned this in my talk, and I guess Shashank also shared the information in chat. Yes, it's Skia. Skia is the rendering engine of Flutter, and what is the name of the new rendering engine? बताओ कोई. Impeller. Yes, and Flutter T-shirt अभी भी ऊपर है. Abhinav is coming on third position. What is the name of Flutter's first version? ये बहुत कम को पता होगा, ये मैंने टॉक में भी नहीं बताया था. फिर से किया ही है शायद. इतने टाइम में तो गूगल भी कर सकते हो. क्या बात है. ये 9 लोग कौन है जिसको पता था ये? That Flutter's first version was Kai. Nice, nice, nice. Okay. Moving forward. Flutter T-shirt सच में तुझे कुछ नहीं मिल रहा. जो भी है वो. Akansha second, Ishita third. In which language is Flutter's Kia engine written? ये भी मैंने टॉक में बोला था. C++. Flutter's Kia engine is written in C++. Kia engine is responsible to take the Dart code and convert to the iOS or Android runner. Okay. Maybe. I think Aditya is Flutter T-shirt. Aditya or Dev? Who is Flutter T-shirt? So whoever is Flutter T-shirt will send you Flutter T-shirt. From which function does our Flutter app start? Run app. Void main is responsible for starting of the program, not the Flutter application. Flutter application is responsible. Run app is responsible to start your Flutter application. You can join again, I think. I unlocked it. Whoever is pending, we still have few questions. You can join now if you want. When you build the Flutter app the first time, it will take a longer time. True or false? It's true. Everyone answered correct. क्या बात है. Flutter T-shirt was dropping off now? Okay. How many types of trees are there in Flutter and what are their names? Very few might know this.
It's widget tree, element tree, and render object tree. Only two of them knew. Who were that two? Dev and Aditya. Yash, Tanya. Ah, so that was the main concept. Okay. Moving on. What is set state used for? So set state is used to re-render UI with new values. I showed you that if we remove set state, the value was updating, but the UI was not getting updated. Okay, and still same leaderboard, no